Good. Chalo, shall we start where we left? So, what are the topics we did in the last last class? Where I told you gave you the introduction. Like, first of all, what we understood that do we have to panic or we don't have to panic? We don't have to panic. Everything will be covered word to word. Okay? If you remember, I gave you the introduction of the various standards last class. Where like we have the different types of standards. If I am not wrong, I gave you the introduction of that. Like we call it as SAs, SAEs, SREs, SRS, and SQC. So we have to talk a little bit about them. But before that, let us finish off the remaining patchwork which we are left with. Okay? Achha, till the time you are not getting your material, so let's read it from the ICA material only, so that you will also be habitual of reading the ICA material. The reason being very simple, why I was not touching the ICA material first, because ICA material mein everything is being given in a paragraph manner. Very big points are given. So I will do one thing, I will read it out from here, will make you understand the concept, and then we will give you the notes. Is it fine? ठीक है? फिर जिसकी भी हैंड राइटिंग अच्छी है उसके नोट्स को मैं जेरोक्स करवा लूंगा. ठीक है? Any one of you who is having the best handwriting? अबे लॉन्डो में तो मैंने पूछा ही नहीं है. अपनी हैंड राइटिंग इज लाइक अ डॉक्टर, राइट? और नो वन अंडरस्टैंड. और इज इट किसकी हैंड राइटिंग अच्छी है बताओ? हु? व्हाट इज हिज नेम? भाई यू आर गॉड, यू आर एन एक्सेप्शनल आइटम. गर्ल्स में देखो, रूल नंबर 1, आई डोंट नीड कर्सिव राइटिंग. Okay, shut down. Hello, silence. First of all, I don't need the cursive writing. Reason being very simple, my writing is also cursive. So I hate cursive writing. वो जो ऐसा जोड़ के, because in the cursive writing, A, E, O, I, O, U, everything will remain same. ठीक है ना? जिसकी handwriting अच्छी हुई, last में अपन xerox ले लेंगे. ठीक है? Shall we start now? Okay. So are we done with the inherent limitations already? Please tell me what are the 5 inherent limitations I made you write. What are the 5 types of inherent limitations? It is not less than a which activity? Post-mortem activity. And we always do our audit on which basis? Test basis, due to which some of the frauds and errors will definitely remain undetected. And most of our audit is based on which evidence? Persuasive evidence rather than what? Conclusive. और 4th में हमने लिखा था कि audit is not about what? Guarantee. Audit is only about opinion. The shareholders will never get the guarantee on the financial position of the company. And the 5th one I made you write, audit is purely dependent upon professional judgment. What is material in one eye may not be material in another eye. ठीक है? ये हमने सब पढ़ लिया था. Now today we are going to understand a very different kind of topic. And if I am not wrong, I made you write the threats as well. What are the 5 types of threats we have written? Self-interest threat, self-review threat, advocacy threat, familiarity threat, intimidation. Did I also give you the solution also? So we written the forms, types of the threats as well as the safeguards to those threats. Okay? Now what we are going to understand today is known as, what do you mean by the term called what? Engagement. See, try to understand. ये वो वाली engagement नहीं है. इसके बाद expect करे होगे सर marriage आएगी. Then चिन्ना पिल्लाडू. Nothing. अच्छा सुनो. What do you understand by the term called what? Engagement. Silent please. Now try to concentrate. In auditing language, whenever we take up any assignment from our client, let it be audit assignment, let it be assurance assignment, let it be review assignment, let it be related, even though a small attestation work also. Whenever you are getting paid for your services, it is known as what? Engagement. तो engagement का मतलब यहाँ पे क्या होता है? The contract between whom and whom? Auditor and client. So for any kind of services what he is hiring you for, that particular thing is known as what? Engagement. Now read what is written. What do you mean by engagement? Read everyone. Engagement means arrangement to do something. Who is going to do? Auditor. For the behalf of whom? Client. In the context of auditing, it means a formal agreement between whom and whom? Auditor and client, under which auditor agrees to provide what? Auditing services. It takes the shape of engagement what? Letter. If you remember, a engagement letter ka word I already made you understand when we did the scope.
कि boss, it is a letter which the auditor will prepare and will send it to whom? Client. कि boss, these are my terms and condition. If you are okay with that, then this is the scale of fees. This is what I will do, I will not do. So I don't want any kind of future misunderstanding. So we call it as engagement. So meaning of engagement understood? So it is a formal agreement between whom and whom? Auditor and client, where the auditor agrees to his client to provide some set of services, which can be auditing, which can be assurance, which can be related, which can be review services, right? Next point. What do you mean by external audit engagement? What simple सा question है. We are into the auditing field, and auditing field is a very wide field. Let me tell you today the introduction of these two auditors. One is known as internal auditor and one is known as which auditor? External auditor. अब ध्यान से सुनो. In the whole auditing syllabus, whenever we will talk about only one word called what? Audit. It means we are always talking about what? External. Whenever I have to speak about internal auditor, I myself will use a word called internal auditor. What is the word? Internal. Otherwise, if I'm only using the word called auditor, what I'm talking about? One who comes at the end of the year. When? At the end of the financial year, only for the limited period of time, that person is known as which auditor? External. अब problem क्या होती है? Nowadays, businesses are growing larger and larger. They are going too big now. अब तुम बिलीव नहीं करोगे, रिलायंस की फाइनेंस टीम, अगर अपन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनेंस टीम में देखे तो उसमें 1400 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है. कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट? 1400 ओनली इन इट्स फाइनेंस टीम. रीजन, they know that ki CA in practice is going to come at the year end. Am I correct? He is going to come and do the which audit? External audit. But they don't wait for the CA to come and let them know ki what are the frauds and errors. So I want prevention to be better than what? Cure. So should I be reactive company or proactive company? Proactive का मतलब क्या होता है? Letting the injury happen to you or avoid the injury? Avoid the. So should we be proactive or not? So companies nowadays are becoming proactive. Nowadays they are hiring which auditors? Internal auditor. They are hiring the same CA, not the same person, same chartered accountant they are hiring, who is going to be there with the company how many days? 365. It means he is going to be a friend, he is going to be a guide for the company. Are you getting the point? He will guide you for 365 days, don't do this, do that. So he will let you know where you are falling. Suppose GST का returns है. Every month के 20th को we have to file the which return? GST return. तो अभी which month is going on? November. तो November का GST return will be filed on 20th December. So who will keep on pinching you whenever the cutoff dates will come? Internal audit. He is also CA, but the only difference is if this person is appointed directly by whom? Management, and this person is appointed by shareholders in the which meeting? AGM. ये reporting किसको करेगा? Management को. Which auditor? Internal. And other person will report it to whom? Are you getting the point or not? He is reporting to whom? Shareholders or users of financial statement. So both the people are doing the same thing. They are only providing the auditing services, but one is providing to the management and one is providing to the users of the financial statement. So who is the puppet of the management? Internal audit. Who is going to be there with the management only for a limited time or throughout the year? तो ध्यान से बताना किसको फीस मिलेगी, किसको सैलरी मिलेगी. Internal auditor is on which basis? Salary basis. And external is on which basis? आप डिफरेंस समझ रहे हैं? ये बंदा शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करेगा, ये बंदा किसको? टेंडर. He is doing it only for limited purpose. He is doing it for throughout the year. अब next question very important. Whose scope will be wider? Internal auditor as compared to what? External. क्योंकि he is going to take care of your both financial plus non-financial areas. ये दोनों चीज, क्योंकि he has a lot of time. Is he only going to cover your balance sheet P&L or everything? Everything. But what about the external auditor? Is he coming for throughout the year or limited time? So his concentration is on which information? So who is more wider in scope? Internal is more wider as compared to what? External. आप समझ में आया? क्योंकि who is staying for a longer period of time? Internal as compared to what? External.
One is for the management and one is for the shareholder. अब समझ में आया? So who is called internal auditor? The one who is appointed by the manager. Now why I told you this? Because I wanted you to understand this word. What is the heading written? External audit engagement. मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? The one who is appointed by the shareholders in the AGM or the one who is appointed by the management? As simple as that. ICA is not complexing you in any manner. ICA is just giving the very technical words. You have to understand the meaning first to go inside the topic. So let's read what he's saying. The purpose of external audit engagement is to enhance the degree of confidence of, what is this word? कौन है अपने intended user? Shareholders, management, government, creditors, lender. Do we decrease their confidence or increase their confidence? तो वही तो लिखा उन्होंने क्या लिखा है? External audit engagement is to, read this point, is to enhance the degree of what? Confidence of which users? I simplify you, tell you that ki auditing is an nothing but which increases the confidence of the users of financial. I also told you the same thing. It is just that same thing. Like instead of saying sorry like this, they are saying I'm sorry. समझ में आ रहा? थोड़ी सी heavy language है, थोड़ी सी technical language है, but I will make you perfect in reading that. अब पढ़ो. Such engagements are also known as what? इसका मीनिंग बता दो. What do you mean by reasonable assurance engagements? Do we give a guarantee or opinion? Do we give absolute assurance or reasonable? So they are also known as what? Reasonable assurance engagement. What is wrong in that? Correct? Next point. For example, in India, companies are required to get their annual accounts audited by a external auditor. Even non-corporate entities may also choose to have their accounts audited by a external auditor. अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ. Let's say example A Limited है, वो कंपनी है, करेक्ट? कंपनी के लिए तो ऑडिट क्या है? कंपल्सरी है, whether you are a profit oriented or not. But suppose your father is running or the mother is running a sole proprietorship business. अब now they are company or non-corporate. For them, when the audit will become compulsory, when their turnover will exceed what? 1 crore. Sir, where we are going to learn when your PGBP chapter will start? Profits in business profession gains. Are you getting the point? ये चैप्टर में आप एक सेक्शन पढ़ोगे 44AB. What is the name? 44AB. 44AB section will tell you कि if you are doing a profession, then if the turnover crosses 50 lakhs, audit is compulsory. And if you are doing the business, if your turnover crosses 1 crore, then also the audit is compulsory. But if you are a company, irrespective of your turnover, irrespective of profit, audit is always what? Compulsory. Now read the point now. What is it? In India, companies are required to get their annual accounts audited by the external auditor, but even for a non-corporate, they may choose to have their accounts audited by what? External. क्योंकि let's say for example, your father is doing a very small किराना store. अब तुम्हारा टर्नओवर है 90 lakhs. ध्यान से सुनना. What is your turnover? Audit compulsory or not compulsory? But still you would like to get it audited. Reason? Because your father wants to expand a business. So he wants to open a new branch. For the new branch, does he need a loan or not? Now for the loan, he will go to a bank. Bank will ask you FS or AFS. So it means he will hire a chartered accountant to do the audit or not? So बताओ, is this a compulsory audit or voluntary audit? Voluntary audit. But compulsory is for whom? Company. लेकिन when your voluntary audit will become compulsory audit? Either your turnover is more than 1 crore or professional turnover is more than 50 lakh. ये अपन कहां पे पढ़ेंगे? टैक्स में पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 44AB इनकम टैक्स एक्ट में. 100% क्लैरिटी? कोई डाउट यहां पे? राइट. ओके, नेक्स्ट वन. Benefits of audit. Why audit is needed? I already told you the 9 advantages of audit. Can you repeat one by one? Point number 1. It enhances the confidence, reliability, credibility of our what? Financial statement. Point number 2. It helps in early detection and early prevention of frauds and error. Point number 3. It keeps a moral check on the employees and staff of the management. Point number 4. It helps in attracting loans, advances, investment. Point number 5. अब मेरे को ये बताओ, we already discussed it or not? Can you fit in that answer here? Read what is the heading.
Benefits of audit. Why audit is needed? This is the reason why audit is needed. How many points? Same points I made you write, but when you will see it here, it is written like this. But when I made you write, I made it very simplified. Helps in, improves in, this and that. Simple. Is it correct or not? Topic is over. I'm just trying to tell you that what we have done, it is already covered in ICA material. What is the next topic, please? Audit is mandatory or voluntary? I will not tell you this topic, you tell me. When the audit is mandatory, when the audit is compulsory. Company है तो compulsory है. But if I'm a non-company and turnover is also less than what, 1 CR? But can I still hire a chartered accountant? Can I get my books audited? तो क्यों audit करवाना? क्योंकि इसके बहुत सारे advantages हैं. Now banker will give me a loan not by seeing my FS. He will give me a loan by seeing my AFS. That's why I need the audit done. तो audit are of two types. तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं? Statutory audits and non-statutory audits. What do we call it as? Statutory audits and non-statutory. Now let me tell you one thing. What is the difference? अच्छा ये बताओ. Have you heard the word called statute? Statute का मतलब क्या होता है? Law. So something which is compulsory under the law is which audit? Statutory. And something which is not. अब जैसे कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि एवरी कंपनी के ऊपर ऑडिट इज व्हाट? कंपल्सरी. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या बोलता है कि एवरी कंपनी का ऑडिट, एवरी बैंक का ऑडिट इज व्हाट? कंपल्सरी. इंश्योरेंस एक्ट क्या बोलता है? एवरी इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट इज व्हाट? कंपल्सरी. जीएसटी एक्ट क्या बोलता है? आपका अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इतने से ऊपर हो जाएगा तो ऑडिट इज व्हाट? कंपल्सरी. इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? इफ योर बिजनेस टर्नओवर इज मोर देन व्हाट? 1 करोड़, ऑडिट इज व्हाट? कंपल्सरी. तो ये कंपल्सरी क्यों है? व्हाई दिस बिकेम कंपल्सरी? डिड आई मेक इट कंपल्सरी और लॉ मेड इट? वी कॉल देम एज व्हिच ऑडिट? स्टैट्यूटरी ऑडिट. इज इट क्लियर? तो ऑब्वियसली व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्टैट्यूटरी? अब जैसे लेट मी टेल यू वन थिंग. एलएलपी एक्ट आपको पता है? I think it is in your portion also. When you will read the LLP Act, you will read one rule number 24 in LLP Act. उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि if your partner's capital contribution, what is PCC, exceeds 25 lakhs and if your turnover exceeds what? 40 lakhs, तो भैया audit is what? Compulsory. It means when it is voluntary. If the capital contribution is less than what? 25 lakhs and turnover is less than what? Till that time you are running a LLP business. Till that time it is voluntary. But the moment it will cross, it will become what? Compulsory. तो अब बताओ statutory, non-statutory का difference समझ में आया? Which is compulsory under the law? Statutory. Which is voluntary? Non-statutory. Now let's read it out. What is the meaning written? It is not necessary that audit is always legally mandatory. There are entities like companies who are compulsorily required to get their accounts audited under the law. Even a non-corporate entities may be compulsorily requiring their audit under the tax laws. Under the which laws, everyone? Please tell me what they are trying to tell. Under Income Tax Act, when it is compulsory? Turnover exceeds 1 crore. Professional turnover exceeds 50. For example, if every person is required to get the accounts audited, if his turnover crosses a certain threshold limit under the income tax law. Why they are not talking about here? Because we are doing the auditing subject. Threshold limit I already told you, business की 1 CR है and professional business की 50 lakhs. Next point पढ़ो. Audit is, next point is what? It is also possible that some entities like what? School may be required to get their accounts audited for the purpose of obtaining the grant or assistance. अब let's say for example, मेरा एक charitable hospital है. What is my hospital? Charitable. What do you mean by charitable hospital? Am I doing the treatment with money or without money? But to run a hospital, do I need medicines? Do I need oxygen cylinders, MRI, CT scan machine? For that, so I need what? Money. मैंने गवर्नमेंट को अप्लाई किया. मैंने कहा सर आई नीड अ ग्रांट और डोनेशन और अ चैरिटी और अ सब्सिडी. गवर्नमेंट सेड दैट शो मी योर अकाउंट्स. Which accounts? Unaudited or audited? Even though as a hospital I don't need an audit, but do I still have to hire or not? Yes. क्योंकि गवर्नमेंट विल गिव मी द सब्सिडी ऑन द बेसिस ऑफ माय AFS. Is it clear? Now read the point again. It is also possible that some entities like school may be required to get their accounts audited for the purpose of obtaining what? Grant or assistance from the government. Don't worry, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा आपको, but पहले अपन टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है? Audit is always not
audit is not always mandatory. Many entities may get their accounts audited what? Voluntarily because of the benefits from the process of what? Audit. Many such concerns have their internal rules requiring audit due to the advantages flowing from an audit. जैसे मैंने आपके father की बात करी, if he is having a 70 lakhs of turnover business, still his audit is compulsory or voluntary? But he wants to open a branch. Does he need a loan? The bank will give you the loan on what basis? So he will get it what? Done. तो दो तरह के ऑडिट होते हैं, कंपल्सरी, वॉलंटरी. बट इन अवर लैंग्वेज वी कॉल देम स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी. 100% क्लैरिटी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हु अपॉइंट्स द होम ऑडिटर. अब मैं तुम्हें बताता हूं प्रॉब्लम. अब मैं ICAI हैव डन अ वेरी बिगेस्ट मिस्टेक बाय रिमूविंग द वर्ड company audit chapter from your portion. Actually, in your law, there is one same chapter. I already told you the chapter name is audit and auditor. But let me tell you one thing. When you will read it in the law now, you will not be able to justify that chapter. Because the faculty of the law will teach you from the law point of view. Which point of view? What is important, what is not important, what is compulsory, what is not compulsory. But when this same chapter we used to teach from our point of view, then in that case we tell you so many other angles also कि auditing की life कैसे होती है, what are qualification and disqualification. So it was, I think it should have been removed from there, but it should have been a part of your auditing. But anyways, don't worry, sir will do the justification. In case any doubt is relating to particular topic, you can always welcome to come to me and ask me कि sir what is the meaning of this particular topic, क्योंकि उस zone में I can also help you out. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द टॉपिक नेम. पढ़ो, हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर. अब मैं तुम्हें एक ध्यान से आंसर बताता हूं, इसको ध्यान से सुनना एंड आई विल मेक यू राइट इन द फॉर्म ऑफ चार्ट. इंडिया में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज. वन आर कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनीज एंड वन आर नोन एज व्हाट? नॉन गवर्नमेंट कंपनीज. फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट वी सी कंपनीज इन टू फॉर्म. देयर आर टू विजन्स, वन इज गवर्नमेंट, वन इज नॉन गवर्नमेंट. नाउ प्लीज टेल मी योर बेसिक चैप्टर इज ओवर कंपनी लॉ का, यस और नो? उसमें टाइप्स ऑफ कंपनीज करी आपने सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 45 कराऊंगा विच टॉक्स अबाउट विच कंपनी. प्लीज टेल मी चपंडी, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट कंपनी? अ गवर्नमेंट कंपनी इज द वन इन विच एट लीस्ट 51% of paid up share capital is either held by or by both. करेक्ट है? सिंप्लीफाइड वे में तो यही पॉसिबिलिटी है. अब मेरे को बताओ, आई एम ए लिमिटेड कंपनी. व्हाट इज द नेम ऑफ माय कंपनी? इसमें 100 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल है. कितना? इसमें से 25% तेलंगाना स्टेट के पास है, 10% आंध्र प्रदेश स्टेट के पास है, 10% कर्नाटका स्टेट के पास है. ठीक है? एंड 10% हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है. डिड यू गेट द पॉइंट? 25 किसके पास? तेलंगाना, 10 एपी, 10 कर्नाटका और 10% किसके पास है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी? ये अपने पेट्रोल पंप्स है ना, एचपी, बीपी एंड इंडियन ऑयल. तो इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी. प्लीज टेल मी वन थिंग, प्लीज टेल मी वन थिंग, एम आई अ गवर्नमेंट कंपनी? यस और नो? यस, क्योंकि टोटल इज मोर देन व्हाट? नो. योर होल्डिंग शुड बी बाय द गवर्नमेंट, नॉट द गवर्नमेंट कंपनीज. ये कंसिडर ही नहीं होगा. इज इट कंसिडर और नॉट कंसिडर? अब बताओ टोटल कितना है? यू आर अ गवर्नमेंट कंपनी और नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. विल योर आंसर चेंज इफ आई से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? यस. अब समझ में आ गया? तो व्हाट मेक्स यू अ गवर्नमेंट कंपनी? नॉट द होल्डिंग बाय गवर्नमेंट कंपनी, इट्स अ होल्डिंग बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ. 100% क्लैरिटी. नाउ व्हाई आई टोल्ड यू, क्योंकि आई न्यू दैट कि यू डोंट नो दिस. क्योंकि ये बेसिक क्या होता है, जब हम लोग लॉ पढ़ते हैं ना, तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि यू शुड गो इनटू द डेप्थ ऑफ ईच पॉइंट. क्योंकि अनटिल एंड अनलेस, मैंने पहले भी बताया था, व्हाट इज द रीजन योर ऑडिटिंग पेपर इज 5? व्हाई योर ऑडिटिंग पेपर इज नंबर 5? यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, लॉ, taxation, costing.
बिफोर एंटरिंग इनटू द जोन ऑफ ऑडिटिंग। इसलिए बोलता हूं कि ऑडिटिंग की जो नंबरिंग है ना उसमें भी जस्टिफिकेशन है, अदरवाइज दे वुड हैव पुट द ऑडिटिंग सब्जेक्ट इनटू योर विच ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप। अब समझ में आ गया? चलो गवर्नमेंट ऑफिस, अब मैं तुम्हें बताता हूं, अगर आप गवर्नमेंट को चेक करोगे तो गवर्नमेंट में देयर आर ऑलवेज टू ऑडिटर्स। हाउ मेनी? टू। फर्स्ट ऑडिटर, subsequent auditor. Repeat after me. Question arises, sir, what do you mean by first auditor? First auditor is the one who does your audit for the first financial year from the date of your incorporation. अब जैसे मान लो हम लोग एक गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई ऑन 7th नवंबर 2023, इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 7 November 2023 को कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड। व्हेन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर? 31st March 2021। अब सुनो, इफ यू आर द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ विच कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी, तो यू विल बी अपॉइंटेड बाय CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पता है आपको कौन है इंडिया के CAG? वो नहीं पता, लेकिन हमें ये किसने बताया आपको CAG के बारे में? लॉ ऑडिटर एंड ऑडिटर्स हो गया क्या? तो सर ने थोड़ा कहीं पे इंट्रोडक्शन बताया होगा। तो गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिटर इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय CAG। कौन है अपना CAG पता है? गिरीश चंद्र मुर्मू। हु इज द CAG ऑफ इंडिया? ये है मिस्टर CAG ऑफ इंडिया। ये पढ़ो, दिख रहा है? ये देखो, इसकी फुल फॉर्म क्या है CAG की? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, अपनी प्रेसिडेंट पता ना क्या नाम है उनका? हाँ, तो ये उनके रिश्तेदार नहीं है। ही इज नॉट अ रिलेटिव ऑफ अवर प्रेसिडेंट। सुनो, हु इज दिस पर्सन? दिस पर्सन इज लाइक अ ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट। मतलब वी डू द ऑडिट ऑफ कंपनीज, ही डज द ऑडिट ऑफ कंट्री। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? वी डू द ऑडिट ऑफ कंपनी, ही डज द ऑडिट ऑफ country. अब country is divided into 7 UTs, 29 states and 1 union government. ये गवर्नमेंट को ऑडिट करता है। जैसे से फॉर एग्जांपल अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम है TSPDCL, उसको ऑडिट भी यही करता है। TSRTC गवर्नमेंट, उसको ऑडिट भी यही करता है। TGENCO, T-Transco, इंडियन रेलवेज, ICAI, अवर ICAI। व्हाट इज ICAI? तो अपने मटेरियल के अंदर आपने देखा कभी ICAI के नीचे लिखा हुआ है सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? तो ICAI इज अ सेमी ऑटोनोमस गवर्नमेंट बॉडी, उसको ऑडिट भी CAG करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर CAG डज द ऑडिट? नो, ही अपॉइंट्स अस टू डू द ऑडिट ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अगेन रिपीटिंग, ही अपॉइंट्स अस टू डू द ऑडिट ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट। तो हु अपॉइंट्स द फर्स्ट ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज? ओके, अम्मा प्लीज स्टैंड अप। यू ओनली। अरे यू, हाँ, ब्लू कुर्ती। तू अम्मा है? तू खड़ा हो गया, जेंडर चेंज करवा दे तेरा। आपको आपको बोला मैंने। अरे हाँ हाँ, आप ही हो, आप ही हो। आपका नाम क्या है? हाँ, अच्छा बताओ, हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया? जल्दी बताओ। मुर्मू, खाने वाला। हाँ, कौन है मुर्मू साहब? कौन है? डोंट 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 हेल्प। नेक्स्ट यू विल बी द वन, याद रखना। हाँ, इट्स ओके, आई एम तो जस्ट गिविंग अ स्टैट्यूटरी वार्निंग। बोलो। हाँ, ही इज द व्हाट? CAG का फुल फॉर्म? डोंट, CAG का फुल फॉर्म, क्योंकि यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग माई फ्रेंड। That's what I'm saying. You are getting sleep. You are not concentrating. I didn't say anything wrong. You didn't concentrate because you are getting a sleep. Why? Binge watching. Netflix पे कोई सीरीज आई है? फिर क्या प्रॉब्लम है? स्लीप क्यों आ रही है? क्या? क्या बोल रहे? थियरी सब्जेक्ट है। Actually, you should write one application to ICAI. I will tell you the wordings. Respected Chairman, President, ICAI,
I don't like the which subject, especially the one who teaches it. So please remove this subject from a portion. Maybe in a special case they may allow you. Then what is the solution? You know the problem. You don't like theory subject. What is the solution? ये कैसे होता? I don't like, I like it. ये वाले कौन से? You just now I asked you why you are sleeping. What she said, it's a theory subject. What does that mean? कि theory subject देखते मेरे को नींद आती है. I understand one thing. एक second. Like you, I have crossed 40,000 students. Are you getting the point? It's been 13 years I am into this profession. And you guys think that by sitting in a crowd, you will get away from the eyes by not concentrating in the class. That is not at all gonna happen in my class. Want to sleep? Backside is the best place. I don't want to see you guys sleeping. Reason being very simple. Achha, it's a very common sense. Please tell me how you will find me if I'll keep on yawning after every 2 seconds and I'll say, तो कर लो यार अपने आप जो होता था. देख लो यार ये लिखा हुआ है. ये क्या लिखा हुआ? Theory subject. Shit यार. What is this attitude? Boss? मेरी क्लास में एक चीज की प्रॉब्लम है. आई डोंट डू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि बॉयज ने गलती करी तो उनके वाट लगेगी, तुम्हारी वाट नहीं लगेगी, तुम्हारी डबल लगेगी. समझ रहे हो? रात में नहीं सोए तो फिर सुबह की नींद आ रही है. मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हाउ यू विल फील इफ आई विल बिहेव इन अ वेरी स्लीपी मोड. वुड यू गो टू द मैनेजमेंट एंड मेक अ कंप्लेंट? Whom should I make? Are you getting the point? तुम्हें पता तुम्हारा एग्जाम का टाइमिंग क्या है? 2 to 5 एग्जैक्टली आफ्टर लंच तुम्हारी आत्मा परमात्मा से मिल रही है और तुम्हें टेंशन होनी चाहिए कि 2 बजे का क्वेश्चन पेपर मिलेगा. उस टाइम पे समझ गए हो मां? रिमेंबर वन थिंग, टाइम इज वेरी प्रीशियस. It will go like anything out of your hands. It will not come back. You have to invest it in such a manner that you should not regret it at the later stage. Understood, my friend? First and last warning. Sure? अब तुम्हें देखना तुम्हें लाइफ में नींद नहीं आएगी अब, क्योंकि you became a supreme example for everyone. Right? Sit down, please. Okay. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? CAG. CAG की फुल फॉर्म बताओ. Hear it properly. It is known as Comptroller and Auditor General of India. तो मैं आपको ये चीज टॉपिक क्यों बता रहा हूं? So that I can reduce your workload. Otherwise, I could have easily read these 2 paragraphs and gone ahead. ध्यान से सुनो. गवर्नमेंट में 2 तरह के ऑडिटर होते हैं. What are the 2 auditor? First auditor and what is the second one? First auditor or second auditor, both are appointed by whom? CAG. Remember one thing, CAG audit नहीं करता. CAG appoints us. We do the audit of the government companies and we send our report to whom? CAG. He compiles the reports and send it to the President of India and the Governor of State. Ki boss, this is the result of state government and this is the result of union government. Did you understand the process? So be it a first auditor or be it a what? Statutory auditor. We are always appointed by whom? CAG. Because we are talking about the which company? Government. Coming to the other side, which company we are talking about? Non-government company में if you are a first auditor, you are always and always appointed by whom? Board of Director. लेकिन only first auditor is appointed by the Board of Director. From the second auditor onwards, you are always appointed by shareholders in what? Annual General Meeting. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? Members भी बोल देते हैं. समझ में आ गया? अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर फर्स्ट ऑडिटर क्यों अलाउ किया? ये क्वेश्चन तो आएगा ना आपके डिमांड में. सो फर्स्ट ऑडिटर से शेयर होल्डर, माय फ्रेंड, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि विद इन द फर्स्ट 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन शेयर कैपिटल विल बी रेज्ड? शेयर कैपिटल को रेज करने में टाइम लगेगा. प्रॉस्पेक्टस विल बी इशूड,
shares will be allotted. Will it take a lot of time? But we, as a law, we have to appoint him within how many days? From the date of what? इसका मतलब the day on your mail when the certificate of incorporation will come, from that day within the next 30 days, first auditor must be what? Appointed. And who is already appointed before the shareholders? Board of director. You remember na? For incorporation, how many directors we need in case of private company? Minimum 2. Public में minimum 3. These people will appoint. अर्थమైंदा 100%. तो tell me, who appoints the government auditor? CAG. Who appoints the non-government auditor का first one? From second onwards, this is what is the name of the topic. Read the name of the topic now. Please take your opportunity to read it. What is written? Generally, an auditor is appointed by the owners. कौन है अपने owners? Shareholder. In some cases, by the constitutional or the government authorities in accordance with the applicable laws and regulations. For example, in case of companies, auditor is appointed by the members. Shareholders in which meeting? Shareholders are the owners of the company and auditor is appointed by them in what? AGM. However, in case of which company? Auditor is appointed by CAG, Comptroller and Auditor General of India. तो याद रखना, अगर गवर्नमेंट कंपनीज है तो who will appoint? नॉन गवर्नमेंट कंपनीज है तो first one will be appointed by Board of Director. Second onwards, and you know now why Board of Directors? Yes. Take a case of a firm who engages an auditor to audit its account. In such case, auditor is appointed by whom? Partner. अब मेरे को बताओ, पार्टनरशिप फॉर्म में शेयर होल्डर्स होते हैं या पार्टनर्स होते हैं? सोल प्रोप्राइटर में कौन अपॉइंट करेगा? सोल प्रोप्राइटर. एलएलपी में कौन अपॉइंट करेगा? पार्टनर्स. तो whoever is the owner of that entity will appoint whom? Auditor. क्योंकि who is more interested in financial results? Owner. समझ में आ रहा? Next point. There may be a situation in which auditor may be appointed by what? Government authority in accordance with some law and regulation. For example, an auditor may be appointed under tax laws by the which authority? Government. अब वो आपको जीएसटी में पढ़ाएंगे सर. प्रॉब्लम क्या होती है कि से फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट फाइलिंग योर रिटर्न्स ऑन टाइम, तो गवर्नमेंट भी कई बार इंटरफेयर करती है. देखो, टिल व्हाट टाइम गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर? प्लीज टेल मी. टिल द टाइम यू आर फॉलोइंग द लॉज एंड regulation, pay your taxes on time, government will never interfere. Otherwise, tax auditor also is appointed by the shareholders only, but in some exceptional cases who can interfere? Government. 100% clarity. तो ये तो हो गया अपना appointment of auditor. What is this topic name called? Appointment. 100% clarity. इसकी 200% clarity आएगी when the sir will teach you the which topic? Audit and auditor, section number 139, appointment of an auditor. Now let's understand the next topic. What is the next topic written? बहुत सिंपल सा लॉजिक है. हमें अपॉइंट किसने किया? तो हम लोग रिपोर्ट किसको करेंगे? शेयर होल्डर्स को. करेक्ट है नहीं है? गवर्नमेंट ऑडिटर अपॉइंट किसने किया? तो हम लोग रिपोर्ट किसको करेंगे? दिखाओ ऑडिट रिपोर्ट. शुड आई शो यू द प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट और नॉट? ध्यान से देखना पूरा ऑडिट रिपोर्ट. लास्ट में बहुत अभी रिसेंटली अपना आईसीआई का ऑडिट रिपोर्ट, आईसीआई नहीं सॉरी, अपना इसका रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट आई हैव taken care of. I'll show you syllabus. किधर है? हाँ ये रहा. रिलायंस के फिगर्स देख रहे हैं? एक भूकंप लेके आऊं? जस्ट ये छोटे से फिगर है. बस रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? बस 18 लाख. पीछे करोड़ है, वो देख लेना, छोटा लिखा हुआ है. 18 लाख करोड़ रिलायंस का टर्नओवर. बस पढ़ो 9 लाख. ये एक पीछे करोड़ है. अपना जो चेकबुक का बॉक्स होता है ना, उसमें फिगर भी पूरी नहीं आएगी है. अब सोचो रिलायंस कितना सीएसआर करता है, बताओ. वो देखो 1300 करोड़ की तो डोनेशन ही कर देता है रिलायंस. 1300 करोड़. गॉड फॉरबिड आई शुड बी दैट डोनी. भगवान मेरे को गरीब बना दे, मैं वहां पे जाके डोनेशन ले लूंगा. कितने की करोड़ है? 1300 करोड़. बट दैट इज नॉट द मेन थिंग विच यू शुड नो. इसमें मेरे को आपको क्या चेक करवाना है? ऑडिट रिपोर्ट. अभी देखना ध्यान से. ऑडिट रिपोर्ट कैसे स्टार्ट होती है एंड हाउ इट लुक्स लाइक. ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल हमेशा होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. व्हाट इज द टाइटल ऑलवेज? ये सेंटर में होनी चाहिए. ये रही अपनी बोर्ड रिपोर्ट एंड
ये अपना secretarial audit and this is our financial statements and this. ये देखो. Okay. Are you able to see? What is the heading please? बताना independent क्यों लिखा है? Any family relationship? Any financial? No. We are which auditor? अच्छा नेक्स्ट लाइन पढ़ो. टू द मेंबर. हम लोग ये रिपोर्ट किसको एड्रेस कर रहे हैं? शेयर होल्डर. तो वी आर बीइंग अपॉइंटेड बाय हुम एंड वी आर आल्सो रिपोर्टिंग टू हुम. बट सर यू तो सेड दैट वी ऑलवेज रिपोर्टेड टू यूजर्स. एनीबडी वांट्स कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस रिपोर्ट. बट रिपोर्ट के ऊपर हमेशा आवर एड्रेस इज गोइंग टू बी हुम? मेंबर्स. क्योंकि द वन हु अपॉइंट्स इज द वन टू हुम वी वर्क. यहां तक कोई डाउट? 100% clarity. So this is what we mean by which report? Auditor's report. Don't worry, अपना auditor's reporting chapter आएगा ना, then I will teach you the whole auditing report in a proper manner. Then I will tell you the meaning of each and every word which is mentioned over there. क्योंकि what I believe that कि whatever is there in your portion, you should be in a position to do it a practically way. क्योंकि the subject called auditing deserves a practical explanation. That's why I keep on collecting these areas so that you will not regret at the later stage. तो आप बताओ इसका आंसर क्या है? To whom do we report or submit our report? To the member. So it means you already know the answer. Start reading the paragraph what is written below. The outcome of an audit is a written audit report in which auditor expresses an opinion. This report is submitted to the person who made our appointment. In case of companies, there are shareholders. In case of firm, to the whom? Partner. We all shall not discuss understanding reaching so far case study involving discussion among the student regarding the nature, scope, limitation, benefits. अभी तक हमने जितने भी टॉपिक करे हैं. Now I'm going to ask you 3 to 4 questions. You have to give me the answer so that you will get an idea कि how ICE is going to ask you the questions. Can you read the case study, please? Read the case study. Rohit, Gurpreet, Ali and Goriti are the friends since their school days based in Mumbai. They have cleared CA foundation in the same attempt and now planning to appear for what? CA intermediate. All of them are avid new listeners and regularly keep track of business news even on social media. They are trying to understand new subjects including what? Auditing. Rohit, Gurpreet and Ali have started attending live coaching classes being conducted by Board of Studies of ISA. Goriti has not been able to join live yet she is away on a holiday with her parents. However, she plans to catch it up with her friends very soon. Ali has also joined the classes but has what? Skipped some lecture. ये तो अपनी आदत ही है थोड़ा बहुत. Regularly कौन आता है? During one informal get-together, the discussions carried about the new subject of auditing. They discuss many things regarding its nature, scope, objective. ऐसे ही आपको case study आता है पेपर में, in which comprehension type will be given 2.5 page of topic and they will be giving you almost 10 questions to be answered out of it. ध्यान से पढ़ते ना. Goriti was regular in keeping the track of audited results of the company being published in a leading newspaper. तो उसको audit report collect करती थी. Her view was that कि audited financial statement give 100% guarantee. अब बताओ, is she right in saying it or wrong? Do we give absolute assurance or reasonable? To the different stakeholders, it is main reason behind it so much reliance upon what? Auditing. तो इसका मतलब ये मैडम को inherent limitations के बारे में नहीं पता, जो आपको पता है. करेक्ट है? Auditing is not less than a which activity? Do we do full checking or sample checking? Is it persuasive or conclusive? Is it an opinion or guarantee? Is it a judgment based or not? तो वो सारा आंसर आपको यहाँ पे लिख के आना. Inherent limitations of an audit. 100% clarity. But she could not understand why wrongdoings in financial matters are being discovered after many years have gone by. मेरे को ये बताओ, auditor stays for longer period of time or limited period of time? Are we a bloodhound or only a watchdog? Some frauds and errors definitely will remain what? Undetected. So auditing is all about absolute assurance or reasonable. This is the reason some frauds and errors will be detected after so many years later. Next point. Ali also concurred with her view and added that, देखो इसका gender ही change कर दिया. Ali also concurred with her view and added that when financial statements are audited, each and every transaction appearing in the books is verified. बताओ,
अली को सजेशन दो, बताया रखो, इसको नहीं पता है, ही सेइंग ईच एंड एवरी, डू वी वेरीफाई ईच एंड एवरी, क्या करना है? हाउएवर ही कुड नॉट गिव क्लैरिटी टू व्हाट गोरिटी, यहां पे कंफ्यूज कर दिया, यहां पे हर लिख दिया, यहां पे ही लिख दिया। बट मेरे को ये बताओ, पैराग्राफ का मीनिंग समझ में आया? गोरिटी बोल रही है बुक में तो लिखा हुआ रीजनेबल एश्योरेंस एंड यू आर सेइंग दैट इट इज गारंटी। बुक में लिखा हुआ है वी डू सैम्पलिंग, बट तू मेरे को क्या बोल रहा है कि वी चेक व्हाट एवरी। तो गोरिती जो है शी इज कंफ्यूज और नॉट? यस, नाम से तो फीमेल लग रही है। गुरप्रीत वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑडिट वॉज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड, ये सही निकला। He was also of the view that audited financial statements are not against probable wrongdoings in financial matters of the company. Not to be left behind, Rohit also jumped in the fray. रोहित बोला मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी डिस्कशन में आऊंगा। He supported whom? Proud of you, Gurpreet, and also added something of his. अब बताओ यहाँ पे राइट कौन रॉन्ग कौन चारों में से? रोहित को तो बाहर ही निकाल दो, मेरे को नहीं, इसको बाहर ही निकाल दो। वॉज ही प्लान ऑफ डिस्कशन? बचे कौन? अली, गोरिती, गुरप्रीत। इन तीनों में से राइट कौन बोल रहा था? अली क्या रॉन्ग बोल रहा था कि ईच एंड एवरीथिंग करना है, और वो कौन क्या रॉन्ग बोल रहा था? आप समझ में आ गया? ऐसे केस स्टडीज आ सकते हैं हमको। इट मीन्स until unless you don't understand and consume the subject, you will not be able to catch what they are trying to tell. It's like a comprehension. Simple, चार लोगों में conversation हो रही है. You are supposed to tell somewhere inherent limitations, somewhere advantages, somewhere nature scope. Is it clear, everyone? Now, based on above, answer the following. जल्दी बताओ. Question number 1. Gurpreet was of the view that audited financial statements are not a guarantee against a probable wrongdoings. What kind of assurance does audit of financial statement provide? चार ऑप्शन है, MCQ. It provide, चारों पढ़ो, ये बहुत कंफ्यूजिंग MCQ है, चारों पढ़ो, क्योंकि एवरीवेयर यू विल फाइंड द कॉमन वर्ड रीजनेबल 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 रीजनेबल। मेन पॉइंट ये है मॉडरेट, लो लेवल, हाई लेवल और एब्सोल्यूट। हाई लेवल, तो व्हाट इज आंसर? सी इज आंसर। अब समझ रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रीजनेबल। सी, आई नो ऑन विच एरिया दे में आस्क यू द क्वेश्चन, क्योंकि 2019 तक आई यूज्ड टू बी द वैल्यूअर विद होम आई से। मैंने 4 साल आपके एग्जामिनेशन और आंसर शीट्स चेक करी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब मैं तो बताता हूं, ये जो मॉडरेट लेवल और लो लेवल लिखा हुआ है ना, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होते हैं। विच एंगेजमेंट्स? एश्योरेंस। जैसे डू यू रिमेंबर आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट वर्ड केम फ्रॉम projections. Projections are present features of future. Can you be certain about future or uncertain? So will you give a high level of assurance or low level? So audit to assurance to review to related services keeps on changing. That's why we have different types of standards. 100% clarity. Read the next question, please. Rohit added that auditor can force an employee of the company to provide him the required information and documents. Can he do so? Think logically. Can you please check your scope points? Point number 1, no one will interfere in my scope. I have right of access to every information, every person. Is it correct or not? Yes, he can do so. It is necessary to obtain what? Audit. Yes, he can do so. There are express rights given to him in दिस रिस्पेक्ट। नो ही कांट। नो वाला तो ऑप्शन ही छोड़ दो, बचा कौन? इन दोनों में से बताओ विच वन इज लुकिंग राइट आंसर? ए और बी, ए और बी, ए और बी, दोनों आंसर राइट है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? वी हैव टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट डू मीन बाय मोस्ट एप्रोप्रिएट? कि दोनों में से बेटर क्या है? बी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। सुनो, कंपनी ऑडिट जब टॉपिक करोगे, ऑडिटर्स, उसमें क्या लगा? दिस इज वन ऑफ योर राइट। इसको बोलते हैं राइट टू हैव एन एक्सेस। व्हाट डू मीन बाय राइट? राइट टू हैव एन एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है? कि आई कैन गो एंड डिमांड एनीथिंग। इट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन व्हाट? एविडेंस। बट टू आंसर्स कैन बी करेक्ट ना। तो हमें क्या लिखना है? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो दिस इज व्हाट द फाइट यू विल हैव इन योर 30 मार्क्स ऑफ पोर्शन व्हेन द एमसीक्यू पार्ट विल कम। इसलिए what is my suggestion is do the 70 marks of portion first, MCQs do at the
end, क्योंकि they need your patience level, they need your calm level, compose level. Once you are sure that कि 70 में से 40 marks तो मेरे पक्का आ जाएंगे, then in that case you will be little bit relaxed and last में 40-45 minutes completely dedicate to that 30 marks of MCQs. Never attempt the MCQs in the beginning. बताओ भाई, अली की बात करेंगे? बोलो बोलो, अली क्या बोल रहा है? Ali has listened in one of the classes that audit covers all aspects of the entity. Can you read the scope? Can you read the scope and point number 3, please? इसका मतलब you people are not revising. नहीं, सैम्पलिंग के बारे में नहीं है. याद रखो, मैंने आपको पॉइंट भी नीचे लिखवाया था. It covers aspects of the audit. How audit starts. Can you read first of all read the scope का first point? What we have written? Next point, no one के बाद वाला. उसके next वाला. Okay, next वाला. क्या लिखा हुआ? Wheelchair? Matching? Yes or no? Does audit cover all the aspects of auditing? Yes. तो अली राइट है, रॉन्ग है? But उसको क्या हुआ? Goriti also seemed to be in agreement with him, but she was of the view that besides this, it also meant that audit should be so organized to cover all the areas of an entity. Which of the following statement? अब ये देखो, ये क्या लिखा? इसका मतलब all statements are right. You have to choose the most appropriate one. Read the answers, 4 answers. Only the view of Ali is correct. No. Only the view of Goriti is correct. No. Views of both Ali and is it the correct or not? What Ali said? All aspects. What Goriti said? Auditor should plan and organize audit so that it should cover all. दोनों correct ही बोल रहे हैं. So what is the most appropriate answer? आप समझ में आया? This is the confusion you will get it in examination. तो याद रखना, don't treat it as MCQs. Treat it as choose the most appropriate answer. What is it? 100% clarity. समझ में आ रहा है subject? Let's move to the next one. All of them also discuss about the benefits of what? Audit. मतलब वो advantages के बारे में discuss कर रहे थे. Which of the following is not likely the benefit of audit? Which one is not the benefit of audit? Please read it. Since auditing is connected to future events, audited information can be easily relied upon by users. Errors or frauds may be discovered during the audit. Is it correct or incorrect? Correct. Benefit है. What is the second benefit I made you right? मैच हो रहा? सी पढ़ो. Government authorities can also make the use of what? Did I make you right? It helps in resolving the disputes, goodwill, taxation and government. ये भी correct है. It can also helps us in bringing out what? Deficiencies in the maintenance of what? In the auditing, do we check the weaknesses or not? ये भी correct है. तो wrong क्या है? ये क्यों wrong है? Auditing is never about future. It is about future. के लिए तो ये होता है ना, assurance, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? SAEs. यहां पे हम लोग ऑडिटिंग की एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं. बताओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन मींस व्हाट? फ्यूचर. ऑडिटिंग तो इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंट, क्योंकि व्हेन द ऑडिट स्टार्ट्स, तो कैन आई से दैट पास्ट एंड प्रेजेंट इज ऑल अबाउट व्हाट? ऑडिट. तो विच वन इज रॉन्ग लुकिंग आंसर? क्लैरिटी, 100% क्लैरिटी. चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं. Goriti told her friends that she had read a news report about how a company has misled its auditor by producing some fabricated document. मतलब auditor का wrong documents दिए. Which of the following statements seems to be appropriate in this regard? What is your opinion if the client is giving the wrong documents? Is it a fraud or not? ध्यान से सुनना. चारों सेंटेंस पढ़ो और मेरे को बताओ what is the most appropriate answer. Read the sentence number 1. It was wrong on the part of auditor to rely upon what? Fabricated document. He must have discovered it as the same falls within the scope of his duty. When he knew that it is a wrong fabricated accounts, he relied it. It is whose mistake? Auditor. So they are saying that he should have done it something else. Point number 1. Point number 2 पढ़ो. Although it was wrong on the part of what? Auditor to relying upon the fabricated document, he cannot do anything in this matter. He has to report on the basis of document provided to him. He has no duty in this record. Third पढ़ो.
Auditor has to conduct audit by exercising what? Professional skills, but he is not an expert in discovering the genuineness of documents. Hence, management consisting of dishonest persons may have led him to rely upon the fabricated accounts deliberately. And last one, management cannot mislead the auditor due to high level of knowledge and expertise possessed by him. Therefore, above is an outlier case, one of the rare and odd cases. अब मेरे को बताओ, हम लोग गॉड है या नहीं है? डू वी ऑल्सो मेक मिस्टेक? तो ये तो रॉन्ग आंसर है. अब बताओ ए, बी और सी में तुम्हें एप्रोप्रिएट आंसर क्या लग रहा है? क्यों बोला सी? ऑडिटर हैज टू कंडक्ट ऑडिट बाय एक्सरसाइजिंग व्हाट? वो बहुत सिंपल सा आंसर है. आपको दिख रहा है, मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया था. कैन यू चेक द क्वालिटीज? मैं लास्ट वन, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. व्हाट इज द मीनिंग आई मेड यू राइट? अलर्ट एंड क्वेश्चनिंग. अगर आपको सामने वाला बंदा झूठ बोलते हुए दिख रहा है, विल यू चेंज योर वे और नॉट? यस, क्योंकि बॉस रिमेंबर, you have to apply your professional skills because on your signature lakhs of people are dependent upon. अब बताओ, all the four answers were looking very similar to each other, but you have to choose what? Appropriate one. So remember, ICA papers are not going to be that easy platter way. You have to be little bit different from someone who does not read the question properly. इसका मतलब, to conquer the ICA examinations, you need to have a good reading skills. With skills or patience. Don't jump to the conclusion just by reading one option. Read all the four, then analyze which one is looking what better. मेरे को मालूम है, you will agree with me, some of you are premature evaluators. Do you agree with me? कई होते हैं बच्चे who do not allow the sentence to get completed, they immediately will start writing, or when they will realize? After 5 o'clock, after coming out of which hall? क्योंकि you will discuss your question paper with whom? Your friend. उन्होंने बोलेगा इसका आंसर ये नहीं, ये था पागल. Oh shit. खा लो जाके. समझे मैं क्या बोला? Oh shit. खा लो जाके. फिर एग्जाम में क्यों नहीं दिमाग लगा? इसलिए मैं बोलता हूं, 9 months of your coaching is going to be tested in what? So which one is more crucial? बेसिक कर देते मुंह पे तुम. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बच्चे अच्छे से बोलेंगे, आंसर बोलेंगे. क्या अच्छा तुम लोग नीचे से आंसर देख रहे थे क्या? झूठ नहीं बोलना, पक्का. चलो फिर इसका आंसर बताओ. फिर जल्दी बताओ. जीवा प्रोडक्ट्स का आंसर बताओ. नहीं, व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस फ्रॉम द आईसीए मटेरियल, एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि आईसीए की बुक को रीड कैसे करना है, सो दैट यू विल नॉट स्टार्ट पैनिकिंग अगेन. करेक्ट अम्मा? राइट. रीड द क्वेश्चन प्लीज. जीवा प्रोडक्ट इज अ व्हिच फर्म? Engaged in the trading of designer dresses. The firm has appointed JJ & Co. chartered accountants to audit their accounts for the year. Auditors were satisfied with the control system of the firm, carried out required proceeding and necessary verifications. In particular, they carried out a which checking? Sample checking of purchases, traced some purchase bills toward GST portal, and also made confirmations from the supplier. They were satisfied with the audit evidences obtained by them as a part of audit exercise. An audit report was submitted to the firm, giving an opinion that the financial statement reflect which view? True and fair view. मतलब वो क्या opinion दे रहे, positive या negative? However, later on it was discovered that the purchase manager responsible for procuring the dresses from one location was also booking fake purchase. अपना जो purchase manager था वो fake purchases को book करके he was putting the bogus purchase bills. What do you mean by bogus? Actual sales or fake one? उसका impact क्या आएगा बताना? Purchase will increase, gross profit will decrease. Are they avoiding the tax? Now by colluding with unethical dealers, उसने मिलीभगत करी हुई थी उनके साथ, and they were also giving the fake invoices. He was also putting the fake payments to these dealers were also made in what? Covenants with accountant through which channel? Banking. The partners of the firm started blaming whom? Auditor for the futile audit exercise. Next one. Are the partners of the firm correct in their point of view? मेरे को ये बताओ,
आपको क्लियरली आई मेड यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स बिटवीन द टू। अब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी व्हाई आई टोल्ड यू बाइफरकेटेड बिटवीन द टू। अब मेरे को बताओ व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या मैंने कहीं पे भी प्राइमरी में आपको लिखवाया डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स? वेयर इट इज रिटन? तो ये प्राइमरी किसका है? मैनेजमेंट। तो भाई तुम्हारा परचेज मैनेजर तुम्हारी नाक के नीचे फ्रॉड कर रहा है 365 डेज से, इट वॉज हुज फॉल्ट? मैनेजमेंट फॉल्ट। हाउ डू यू एक्सपेक्ट विद मी? एम आई अ ब्लड हाउंड और ओनली अ वॉच डॉग? इज दिस ब्लेम गेम राइट और रॉन्ग? इज ऑडिटर टू बी ब्लेम्ड और मैनेजमेंट टू बी ब्लेम्ड? बॉस, डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड करेक्शन, रिपीट, of frauds and errors is the prime responsibility of management, not the auditor. क्योंकि देखो उन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन में आपको पहले आइडिया दे दिया है। डिड आई डू सैंपल चेकिंग? आई डिड व्हाट आई हैव टू फॉलो। डिड आई चेक द जीएसटी पोर्टल ऑल्सो? आई डिड व्हाट आई फॉलो। डिड आई डू सम कंफर्मेशन विद द सप्लायर्स और नॉट? और मैंने ऑडिट रिपोर्ट भी टाइम पे दे दी। इसमें मेरा कोई फॉल्ट ही नहीं है। आप मेरे को बोल ही नहीं सकते कि ऑडिटर अपॉइंटेड, लेट द ऑडिटर डिटेक्ट ऑल द फ्रॉड्स एंड एरर्स। हम सिर्फ वही फ्रॉड्स एंड एरर्स को देखेंगे विच विल कम ऑन अवर वे। इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू द मीनिंग, इफ वी कम अक्रॉस। व्हाट इज द वर्ड? कम अक्रॉस। भाई मेरे को नहीं दिखा परचेज इनवॉइस, दिस इज द रीजन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द फ्रॉड्स एंड एरर्स विल डिटेक्टेड। अंडरस्टूड? 100% क्लैरिटी। तो क्या लिखा हुआ है नीचे? आंसर पढ़ो। Audit is a type of assurance engagement under which auditor gives an opinion to whether financial statements give a true and fair view or not. However, assurance engagements are not restricted to what? Auditor. We shall not discuss the meaning of assurance engagement and different types of assurance. अब जाके हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा SAs, SAEs, SREs। अब देखो, did I already tell you all these things? मैं तुम्हें दिखाता हूं, एक सेकेंड। ये देखो यहां पे स्टार्ट होगा, ये देखो ऑडिट, रिव्यू, एसआरएस एंड ये पढ़ो क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। हमने ऑलरेडी कर लिया था। व्हाट इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड लास्ट वन इज व्हाट? और उसका मदर स्टैंडर्ड कौन होता है अपना? आप समझ में आया? Now they are going to let us know कि what is the difference between one engagement to what another. अच्छा, इनकी नंबर देखो आप, ये आपके फाइनल में वेट कर रहे हैं। They are waiting for you in what? Not there in your like intermediate. Intermediate में आपको सिर्फ essays हैं। What do you have? अब ये देखो इसके नंबर पढ़ो, ठीक है। अब इसके नंबर पढ़ो अपने SRE। और अभी तो आपको 800 सीरीज एंड 400 सीरीज भी एलिमिनेट हो गई। तो इन द essays also you have only what? 6 series to be taken care of. 100% clarity? समझ में आ रहा है? So let us understand what is the next topic. अच्छा, before that let me make you write, put the heading. हमने लास्ट टॉपिक क्या लिखा था? हाँ ना, put the heading. बेनिफिट्स हमने करा। What do you mean by engagement? Put the heading. What do you mean by the term engagement? अब इजी लग रहा है ऐसे का मटेरियल? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अंदर पूरा पढ़ना स्टार्ट करोगे तो यू विल स्टार्ट गेटिंग द टॉपिक विच यू हैव डन। इट्स जस्ट दैट लिसन टू द क्लास प्रॉपरली, आफ्टर दैट रीड द टॉपिक। एंड सपोज इट सम टॉपिक इज लुकिंग एलियन टू यू, इट मींस वी हैव नॉट कवर्ड इन द क्लास। तो bring it to me so that I can cover it in the class. Did you get the point? ये सिंपल सा होमवर्क आपको करना है, ठीक है। Put the heading. What do you mean by engagement? तुम बताओ, what do you mean by engagement? Any assignment taken up by the auditor is known as engagement. Is it a formal contract between whom and whom to provide the services or not? Simple. Put the heading. Engagement means, point number 1. Engagement means an arrangement to do something. Engagement means an arrangement to do something. Engagement means an arrangement to do something. Point number 2. It's a formal contract between
auditor and client. It's a formal contract between auditor and client where auditor agrees to provide services. It's a formal contract between auditor and client where auditor agrees to provide services. Auditor agrees to provide services. Clear? Point number 3. It is broadly classified as internal and external. It is broadly classified as internal and external and statutory and non-statutory. It is broadly classified as internal and external and statutory and non-statutory. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ एन ऑडिट. उसके आपने आई थिंक डिड आई मेक यू राइट एडवांटेजेस लिखा हुआ ना, तो वही एडवांटेजेस है. नेक्स्ट पॉइंट, नाउ पुट द हेडिंग स्टैट्यूटरी वर्सेस नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट. पुट द हेडिंग स्टैट्यूटरी वर्सेस नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट. लेफ्ट साइड पे स्टैट्यूटरी लिख लो एंड राइट साइड पे नॉन स्टैट्यूटरी. On the left side write statutory and on the right side write non-statutory. Now, under the statutory, first point, an audit which is required by law, which is compulsory under law. An audit which is compulsory under law. नॉन स्टैट्यूटरी में क्या लिखेंगे भाई? कंपल्सरी और प्राइवेट और वॉलंटरी. एन ऑडिट which is either private or voluntary in nature. An audit which is either private or voluntary in nature. अच्छा, ध्यान से आंसर बताते जाना मेरे को. Where do you think that qualification matters? Statutory or non-statutory? देखो मेरी बात सुनो, जो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है उसमें भी क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग सीए इज ओनली रिक्वायर्ड, बट दैट इज कंपल्सरी अंडर द आईएसओ लॉज और नॉट कंपल्सरी. अब मैं तुम्हें बताता हूं प्रैक्टिकली होता क्या, बताना मत किसी को. ओके, ध्यान से. ऑडिट समटाइम्स an unqualified person does and they sometimes bring it to us for the signature purpose. ऐसे भी होता है. Are you getting it? अब मैं तुम्हें बताता हूं, कई चार्टेड अकाउंटेंट्स क्या होता है, दोज हु डू अ जॉब. अब जॉब में प्रॉब्लम क्या होता है, मंडे टू सैटरडे और फ्राइडे दे आर एट द विच प्लेस, जॉब प्लेस. अब सैटरडे संडे वो लोग क्या करते हैं, पीसीओपी ले लेते हैं, पार्ट टाइम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. व्हाट डू वी कॉल इट एज? पार्ट टाइम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. द ओनली डिफरेंस बिटवीन द फुल टाइम सीओपी एंड पार्ट टाइम सीओपी इज साइनिंग अथॉरिटी. विच अथॉरिटी? तो किसके पास साइनिंग अथॉरिटी है? फुल टाइम वाले के पास. बट इट डजंट मीन दैट कि पार्ट टाइम सीओपी होल्डर कांट डू द ऑडिट. ही कैन डू द ऑडिट, ओनली प्रॉब्लम इज ही कांट साइन इट. तो वो साइनिंग के पर्पस के लिए कहां पे आ जाता है? फुल टाइम वाले के पास. इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि क्वालिफिकेशन. अब बताओ वेयर इट मैटर्स. कंपल्सरी कहां पे है, बट मे बी रिक्वायर्ड कहां पे है? ना सर, वही उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था. क्वालिफिकेशन, qualified practicing CA is compulsory. Here, not mandatory. Now here, reporting to the members of company.
and here reporting to the appointing authority. I hope you understood the difference. अच्छा, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म में किसने अपॉइंट किया? पार्टनर्स. तो टू द पार्टनर्स, am I correct? तो that's why instead of writing all those things, I'm writing to the appointing authority. इसके एग्जांपल्स लिख लो. कंपनी ऑडिट, बैंक ऑडिट, टैक्स ऑडिट. All these are the examples of statutory. यहां पे लिख लो पार्टनरशिप फॉर्म, सोल प्रोप्राइटर, हॉस्पिटल्स, schools. So this is what the broad difference between statutory and non-statutory. Partnership form, sole proprietors, hospitals and schools. They only need to get audited only when they're looking for any charity, subsidy, grant and all, right? So that makes them voluntary and private in nature. Clear? Okay, any doubt? कोई यहाँ पे कोई doubt है? पक्का? So that brings an end. If you all have written, everybody noted. So that brings an end to your which audit, everyone? Statutory and non-statutory. अब next topic डालो. Who appoints the auditor and to whom we report? Put the heading. Who appoints the auditor and to whom we report? Who appoints the auditor and to whom we report? Who appoints the auditor में पॉइंट नंबर 1 में ये चार्ट बना लो, ये वाला. इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, in case of government company, this is what do you mean by first auditor, subsequent auditor. In case of government company, bindas you can come to me for audit and auditor chapter whenever it is going to be started in your law, no problem at all. And if there are any particular topics, I would love to teach you, no problem, if sir is not comfortable in some topic, right? In case of government company, first auditor and subsequent auditor by CAG. ठीक है. Point number 2. In case of, लिख लो माँ. In case of non-government companies में first auditor by whom? Board of Directors. Within 30 days from incorporation, subsequent auditor by shareholders in AGM. And below third point में reporting. गवर्नमेंट कंपनी के केस में टू द CAG, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. If possible, I will show you one government audit report also, where you will understand that ki how we address our issues to CAG. I hope today you got the further clarity, 100%. ठीक है? Okay, let's see if there is any small, anybody writing? Please note it down. Done? Okay, so let's see if there is anything to whom report is submitted. Case study we have done, and based on that, all those things. So 4-5 days we will do it from here so that you will get an idea how to we do. Then our standards things will be started. So at least you will get an idea if this is the word, what is the meaning of this word in ICA material, technicalities. What is the next topic we have done? I think we have to start, right? What is the name of the audit? देखो ध्यान से सुनना. नॉट वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल. देखो मैंने पहले ही बताया
we do follow essays when do we do which engagements? Audit engagement. We do SAEs when? अब सुनो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऑडिटिंग में भी तो आपने वर्ड एश्योरेंस यूज किया है, करेक्ट? कि ऑडिटिंग इज ऑल अबाउट गिविंग अ व्हाट? रीजनेबल एश्योर। लेकिन एश्योरेंस एंगेजमेंट में भी वर्ड एश्योरेंस है, बट वी कॉल इट एज लिमिटेड एश्योरेंस। व्हाट डू वी कॉल इट एज? अब ध्यान से सुनो, लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। विच लेवल? इट मींस अगर अपने को कंपेयर करना है बिटवीन ऑडिटिंग असाइनमेंट एंड एश्योरेंस असाइनमेंट में, वेर यू आर गिविंग मोर कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स, ऑडिटिंग, एंड यू आर गिविंग लेस कॉन्फिडेंस वेयर? रीजन बीइंग वेरी सिंपल, क्योंकि वी यूज इट व्हेन वी प्रिपेयर द विच रिपोर्ट्स, and project reports are based upon which events or future events? Can I say that assumption based? Yes. फ्यूचर में आप सिर्फ क्या कर सकते हो? assumption. अब जैसे स्टॉक मार्केट है, आज ट्यूसडे है, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल हैपन टुमारो इन द स्टॉक मार्केट? विल इट गो अप और डाउन? तो व्हाट इज योर assumption? Sir, looking at the scenario, looking at the IPO of Tata Technologies, I think today, tomorrow, or within this week, the rally will be bullish, or maybe next week the rally will be bearish. Am I correct or not? But are you certain? तो तुम मेरे को क्या दे रहे हो? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहे हो या लिमिटेड दे रहे हो? एश्योरेंस वर्ड इज नॉट कनेक्टेड ओनली विद एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑडिटिंग में भी एश्योरेंस होती है, रिव्यू में भी एश्योरेंस होती है, एश्योरेंस में भी एश्योरेंस होती है, और एवरीवेयर इज एश्योरेंस। इट्स जस्ट दैट व्हाट लेवल वी आर गिविंग। डिड वी जस्ट नाउ रीड द पॉइंट और नॉट? अब जैसे हमने ऊपर ये पॉइंट पढ़ा था, ये 4 लेवल ऑफ एश्योरेंस पढ़ो, क्या था? रीजनेबल एश्योरेंस विद व्हाट? मॉडरेट लेवल, सेकंड वन इज लोअर लेवल, देन वन हाई लेवल, एंड देन वन which one is the highest one? Absolute. ये कब होता है? जब हम लोग गारंटी वाला असाइनमेंट करते हैं। कौन सा? गारंटी वाला। What is the above one? Auditing. We are talking about what? Auditing. What is the above one? Lower level क्या? Assurance. और उसके ऊपर वाला? Moderate. जब हम लोग compilation असाइनमेंट करते हैं, what do we call it? तो ऑडिटर इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिटिंग प्रोफेशन। ये जो आप मिथ निकाल दो, ऑडिटिंग इज वन ऑफ द थिंग व्हाट वी कैन डू। We can do lot of things, and if the time will allow, I will show you some of the courses also, which I say provides us to do even post qualification also. There are more than 180 areas where you can make your career after getting qualified. It is you who has to decide कि in which area you want to have an expertise in. अब जैसे मेरा expertise area है कंपनी लॉ, आप मेरे को कंपनी लॉ का सेक्शन, ये वो पूरे 470 सेक्शन ऐसे खाए हुए हैं मैंने, हर रोज खाता हूं खाने के साथ। Are you getting the point? तो वो मेरी कैशे मेमोरी में नहीं है, वो हार्ड डिस्क में है। दिस इज वेयर हार्ड डिस्क। Are you getting the point? तो लॉ मेरा कोर है, ऑडिटिंग मेरा कोर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो मेरा कोर है, एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज माई कोर, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनीज एंड ऑल। GST is not my core, taxation is not my core, but it doesn't mean that I don't know about GST and taxation. We have to be updated. It's just that I don't practice them. उसके लिए I have another partner in my firm who takes care of that assignment. तो हम लोग क्या करते हैं, 6-7 पार्टनर्स अपना अपना एक टीम बना लेते हैं कि wherever the deficiency area is there, एक नया पार्टनर ऐड कर लो who is specialized in that. कि suppose a client is entering to my office, he should not go outside empty-handed. Are you getting? बिजनेस तो देखी जाएगा वो। उन्होंने बोला सर शादी करो नहीं, हम लोग मैट्रिमोनियल पर्सन रख लेंगे। आयु करेंगे, बस आना है, और ही शुड नॉट गो वर्ट एम्प्टी हैंड। उसको जीएसटी का प्रॉब्लम है, हम लोग सॉल्व करेंगे, टैक्स का है, हम लोग करेंगे, ऑडिटिंग एश्योरेंस हम लोग करेंगे। तो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड विच एश्योरेंस? एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब पढ़ो, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? व्हाट वाज द नेम ऑफ द टॉपिक? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड एश्योरेंस? रीड द पॉइंट नंबर 1. Assurance engagement means an engagement in which, point number 1, we don't call ourselves as an auditor जब हम लोग SAE projects करते हैं। We call ourselves as what? Practitioner. Auditor कब बोलते हैं? जब हमें financial statements के ऊपर audit करने के लिए बुलाया जाता है। तो read the point. Assurance engagement means an engagement in which what? Practitioner expresses a what?
conclusion. Point number 2, we don't call it as opinion. We start using the word called what? Conclusion. अब बताओ डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऑडिटिंग में हम लोग अपने आप को क्या बोलेंगे? ऑडिटर. और यहां पे प्रैक्टिशनर. We give it there. We are drawing it here. Conclude. Designed to enhance the degree of confidence of what? अपना वहां पे इंटेंडेड यूजर कौन है? यूजर्स है. यहां पे जनरली बैंकर्स होते हैं. क्या होते हैं? बैंकर्स. क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर लोन मिलता है ना. नेक्स्ट पॉइंट, अदर देन विच पार्टी? Responsible party about the outcome, evaluation or the measurement of what? Subject matter against criteria. ये इतनी हैवी लाइन है कि it will take minimum 15 to 20 minutes का डिस्कशन. इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं. What is the word number 1? मैं पहले इसे अंडरलाइन कर लेता हूं, ये अपन कल पढ़ेंगे. What is the first word? Responsible party. फिर हम लोग ये वर्ड पढ़ेंगे. What is this word? And what is the last word? Criteria. I will tell you how do we do the assurance engagement in that, right? That's it for today. See you guys tomorrow. तो कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे. That what do you mean by SAEs, SREs and in detail थोड़ा सा. ठीक है? Bye everyone. Take care. Thank you. Have a great lunch. तुम्हारा लंच बिगाड़ दिया ना मैंने. लेकिन बेटा जागना बहुत जरूरी है क्लास में. ठीक है? चलता है ये.